Homeopathy saved amputation of necrosed leg. Patient a 67 years old gentleman. First consultation 1st August 2009. Present history. Pain with necrosis at one spot in left leg. Walks limping with great difficulty with the help of a staff. There is a small discharging sinus on the leg. Skin of the leg is rough and dry. See ensuing photo. Very bad smelling matter was discharging from the sinus. Pain used to aggravate in night. No relief from allopathic treatment. Loss of appetite. Urination most frequent in the night. Due to sclerosis, left foot had become stiff and distorted with pain in the left ankle. He is unable to move his left foot due to stiffness. Photo of leg. Arrow pointing the site of sinus is shown in photo taken on 1st August 2009. Present history. About 10 years ago, his left leg was crushed under the wheel of water tanker of tractor. After surgery, he remained well for some time, then the leg started giving him trouble. He was feeling distressed by the pain. At this stage, the orthopedic surgeon has advised amputation as the only solution, for which the patient did not agree and come for homeopathic help. The condition of the bone of the leg as per X-ray taken on 24th July 2009 was as shown in the ensuing photo. From the discharging sinus on tibia, it appeared as if there was necrosis of tibia. Homeopathic treatment was commenced on 1st August 2009. The patient reported that an itching eruption appeared after the medicine, which was now drying up. Patient was feeling journal improvement. By 30th September 2009, the itching eruption had vanished without any other help. The discharge from the ulcer stopped, feeling much relief in pain. Now, the patient could walk without the help of staff. He was much thankful for saving the amputation. See the photo of the leg as on 28 December 2009. The cirrhosis of the foot also improved, and movement in the ankle joint also restored. The patient is satisfied. Now listen his story in his own words. The video clip taken on 28 December 2009. बोलिए। मैं हरिद्वार BHL का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश है भाटी। जी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2000 में। अच्छा। उसके बाद से मैं इलाज कराता रहा। वहाँ दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पड़ा रहा 5 महीने। चोट कहाँ लगी थी? टांग में? फरीदाबाद में। ना पैर में? ट्रैक्टर के नीचे आ गया था। हाँ जी। और उसमें हड्डी टूट गई थी? हाँ, हड्डी एकदम चकनाचूर हो गई थी जी। तो फिर अस्पताल में वो हड्डी हाँ, वहाँ पड़ा रहा मैं जी। फिर वहाँ से मैं वहाँ इलाज नहीं हुआ। हाँ तो मैं यहाँ BHL का कर्मचारी था जी। तो यहाँ पर मैं इलाज कराने लगा। तो इसका उन्होंने कहा पैर काटने के लिए कहा। जी।
फिर मैंने अब मेरे दिमाग में आई कि मैं देहरादून में हमारे दामाद यहाँ रहते हैं, लड़की ब्याही है यहाँ पर, तो उसका कहने से मैं यहाँ आ गया। मैं डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया, उन्होंने मेरे को पूरा भरोसा दिया, आप चिंता ना करो, हैं जल्दी ठीक हो जाओगे। और आज मैं बहुत अच्छी तरह ठीक से चल रहा हूँ, हाँ जी। बिना डंडे के। बीच में आप चल नहीं पाते थे, हाँ, चल नहीं पाता था, घाव हो गया था। बहुत परेशान रहता था। हाँ, टांग में घाव भी हो गया था। हाँ, घाव हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। अब तो ठीक है हाँ, अब ठीक हो जी। है ना? अब बिल्कुल अच्छी तरह चलते हैं। हाँ, अब चल लेता हूँ। ठीक। ये पंजाबी चलने लग गया है, पहले घूमता नहीं था थोड़ा, जी, पैर में जान आ गई है। ठीक है। There are other cases also of necrosis and non-healing bone fractures which have been cured under Dr. Mamgai's homeopathic care.